जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स मुझे तुम को आलोचना करी किछि गुरुत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट विषय जोटा तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जोटा पढ़ुछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पढ़ुथुबा इकोनॉमिक्स रो डिफरेंट कॉन्सेप्ट विषय मुझे तुम सहित आलोचना करी। आज मु 20टा कॉन्सेप्ट विषय में रखी 20टा कॉन्सेप्ट। एक रे इकोनॉमिक ग्रोथ, 2 रे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 3 रे डेवलप्ड नेशन, 4 रे अंडर डेवलप्ड नेशन, 5 रे डेवलपिंग नेशन, 6 रे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 7 रे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, 8 रे मिक्स्ड इकोनॉमी, 9 रे डुअल इकोनॉमी, 10 रे प्राइमरी सेक्टर, 11 सेकेंडरी सेक्टर, 12 टर्शियरी सेक्टर, 13 क्वाटरनरी सेक्टर, 14 क्वीनरी सेक्टर, तापर 15 फॉर्मल सेक्टर, 16 रे इनफॉर्मल सेक्टर, 17 रे गुड्स एंड सर्विसेज, 18 रे कंज्यूमर गुड्स, 19 रे प्रोड्यूसर गुड्स, 20 रे कैपिटल गुड्स। ओके ताले ए विषय आमे आबे ब्रीफली आमे जानिबा जद्वारा आमे आउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कला बेले हमको असुविधा होनी। वी कैन नॉट फाइंड एनी डिफिकल्ट व्हेन वी विल फेस द एग्जामिनेशन। तेणु फास्ट हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट कौन? इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट when an economy quantitatively increased in its output or income, then we can call that economic growth. Economic growth गोटे क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट जो गोटे अर्थव्यवस्था रे जेते बेले गोटे उत्पादन बेसी हुए, जात आय बढ़े, मुंड पिछा आय बढ़े बा गोटे परिमाणात्मक भाव रे जेते गोटे देशर अभिवृद्धि हुए आमे ताकू कहबा इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोटे क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेसिकली क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट when in a nation there has been developed in qualitatively both socially and individually। जेते बेले गोटे समाज रे लोक मानकर व्यक्तिगत जीवन धारणर मानर उन्नति घटिबो, तांकर व्यक्तिगत आय बढ़िबो, तांकर व्यक्तिगत जीवन शैलीर अभिवृद्धि घटिबो, तेबे आमे कहबा गोटे गुणात्मक अभिवृद्धि हैला बोली। तेणु इट इज बेसिकली क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन सोशल एंड इंडिविजुअल क्वालिटी। सोशल एंड इंडिविजुअल क्वालिटी। किंतु गोटे कथा मन रखिबा जेते इकोनॉमिक ग्रोथ जेते पद माने जेते पद नहिछि, इकोनॉमिक ग्रोथ जेते पद नहिछि सेते बेले इकोनॉमिक सेते पर्यंत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हबोनी। तेणु इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा पे हेले इकोनॉमिक ग्रोथ साइमल्टेनियसली आवश्यक। कहीं गोटे अर्थव्यवस्था रे जेते बेले ग्रोथ हुए अर्थात क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट हुए इन प्रोडक्शन इनकम, सेते बेले लोक मानकर मुंड पिछा आय बढ़िबो, पर कैपिटा इनकम बढ़िबो बा लाइफस्टाइल बदलिबो, लाइफस्टाइल चेंज होबो बा सोशल गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे चेंज होबो। एई भली भारी गोटे क्वालिटेटिव चेंज इन सोसाइटी बा क्वालिटेटिव चेंज इन बा डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, then we can call it economic development, qualitative improvement in the economy। सेठी कौन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम, टेक्नोलोजी इंप्रूवमेंट हम, एजुकेशन हेल्थ सैनिटेशन सबुतिर गोटे इंप्रूवमेंट हम। तेणु से आम कहवा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके थर्ड डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन आम क्या कहवा ना जिते बड़े माने when some nations have utilized their resources properly and they are advanced in technologically বা industrially in every spheres of life। से माने टेक्निकली डेवलप्ड जिते बड़े गोटे देश टेक्निकली डेवलप हुए बा इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप हुए, इंडस्ट्रियली डेवलप हुए, सेते बड़े आमे ताकू कहिबा बा तार रिसोर्सेस गुड़ा को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे सेते कहबा एटा डेवलप्ड नेशन बोली।
सेतबेले देख तांकर पर कैपिटल हाई इनकम हाई होता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एवं एनर्जी इम्प्रूवमेंट होता है, आईटी सेक्टर और रिसर्च सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल कौन? फ्रांस, जर्मन, यूएसए, इटाली, स्वीडन, नेदरलैंड एटसेट्रा एवं सब डेवलप्ड नेशन माने दोज आर द नेशन in which they have utilized their resources properly and they are advanced in industrially, technologically and infrastructurally, and they have been developed in IT sector and research, IT and research sector and health and transport and communication etc. also ये गला डेवलप्ड नेशन। अंडर डेवलप्ड नेशन आम क्या कहबा ना दोज नेशंस आर नॉट यूटिलाइज देयर रिसोर्सेस प्रॉपर्ली, देयर पर कैपिटा इनकम इज लो, देयर लाइफ स्टैंडर्ड इज लो, they have not been developed in education, they have not been developed in health, industrially and others. Sectorally development is not there, sectoral development is not there. तेणु आम ताकू कहबा अंडर डेवलप्ड नेशन। लिमिटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से थाए, हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जोटी एग्रीकल्चर सेक्टर रे एम्प्लॉयमेंट बा नियुक्ति पाती, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी आम से कहबा एटा होची अंडर डेवलप्ड नेशन। ओके, तापर डेवलपिंग नेशन दोज नेशंस आर बीइंग डेवलप्ड बट नॉट डेवलप्ड, आर बीइंग डेवलप्ड बट नॉट डेवलप्ड, they are utilizing their resources gradually, but they are underdeveloped industrial, they have underdeveloped industrial base and low human development index. Low human development index means which is a indicator of poverty, measuring poverty, literacy, education, life expectancy etc. तारे ये जो डेवलपिंग नेशन रे जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जोटा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सटा बहुत लो थाए, जहाँकि पोवर्टी बा लिटरेसी बा एजुकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजरमेंट करि थाए, सेठी लो थाए सब बळे। तेणु एटा होछु डेवलपिंग नेशन। तापर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कौन ना, it is a model that describes the shift in country's population from one stage to another, from high birth and high death rate stage to a low birth and low death rate. The transition from one stage to another, transition from one situation to another situation, and it occurs in the country's progress through economic social development. There are basically 3 stages, but another 2 stages are added in this category. 3 stages कौन? एक ने हाई 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 तमाने हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, हाई हाई मीन्स हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट्स। दुई रे होची कोन हाई लो हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। 3 रे लो 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 बर्थ रेट लो डेथ रेट। फर्स्ट स्टेज हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, सेकंड स्टेज हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट एंड थर्ड स्टेज लो बर्थ रेट लो डेथ रेट।
Another two stages are added. Fourth रहुची such low law एटा जो पोस्ट इंडस्ट्रियल इरा एटा जो स्टेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आ जो थर्ड अच्छी लो लो सेटा होची स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एटा होची स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अच्छा लेट इंडस्ट्रियल एज फिफ्थ रे से लो लो आसीबो एटा होची लो बार्थ रेट एंड एजिंग पॉपुलेशन एटा होची स्टेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली मु कहबी दुईटा स्टेज तुम्हें छाड़ी दो तीन टा स्टेज तुमको गुरुत्वपूर्ण तीन टा स्टेज तुम्हें मन रखो हाई बार्थ रेट हाई डेथ रेट हाई बार्थ रेट लो डेथ रेट एंड लो बार्थ रेट लो डेथ रेट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स the countries shift up from one stage of economy to another stage of economy from high birth rate and high death rate stage to the low birth rate and low death rate stage. That is called demographic transition, and there are basically three stages: high birth rate and high death rate, high birth rate and low death rate, and low birth rate and low death rate. ये तीन टाइप मन रखियो ठीक अच्छे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन गला पॉपुलेशन explosion means the situation of accelerating rise in population, high rise in population. When the population increases at the rapid and substantial rate, then we can say the stage of population explosion by situation of population explosion. जेतेबेले जनसंख्याटा अतिरिक्त हार वृद्धि पाए एक्सलेटिंग रेट वृद्धि पाए सेतेबेले आमे कहबा से स्टेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बा जनविस्फोरण बोली एंड दिस इंडिकेट्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिकेट्स हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. Population explosion indicates high birth rate and low death rate. Population rises alarmingly due to high birth rate and low death rate. This is the situation of population explosion, or this term is called population explosion. Mortality rate is very low. Death rate means low, death rate means mortality rate is very low. Then come to the point mixed economy. Mixed economy means in an economy when there is existence of both capitalism and socialism, राष्ट्र बा समाजवाद राष्ट्र उपादान गुड़िक अवस्थान करे तेणु एठारे देयर एक्जिस्ट द प्राइवेट सेक्टर, देयर हैज बीन गिवन इंपोर्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो गवर्नमेंट सेक्टर. Governments, there is government intervention in regulating the economy. मान एभली एक अर्थव्यवस्था जो घर प्राइवेट सेक्टर अवस्थान होता है एवं ताकू मध्य गुरुत्व दि जाए
एवं सरकार को मध्य गुरुत्व दिया जाए अर्थनीति को नियंत्रण करने द इकोनॉमी को रेगुलेट करने देयर इज गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस इज नेसेसरी क्लियर डुअल इकोनॉमी द्वैत अर्थव्यवस्था रे dual economy is an economy where there exists the some features of capitalist sector and traditional sector. Capitalist sector means the using high and sophisticated technology in one side, and another side there exists the traditional sector like agriculture using bullock carts and or other traditional methods. तेणु ये द्वैत अर्थव्यवस्था एक पाखरे आमे उन्नत मानर वैषयिक ज्ञान भी व्यवहार करुछु अन्य पक्षरे पारंपरिक कृषि क्षेत्र में पारंपरिक जो पद्धति अवलंबन करुछु ताले एक पक्षरे आमे आधुनिक जंत्रपाति व्यवहार करुछि एवं अन्य पक्षरे पारंपरिक पुरातन पद्धति व्यवहार होछि तेणु ताकू आमे कहबा डुअल इकोनॉमी या फल कौन हुए डुअल इकोनॉमी हवा फल कौन दैट इज जो कॉम्पिटिटिव competition is very high in the dual economy. तापर प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर it is a sector in which the industries are engaged in extraction of natural resources or in the production of raw materials. जो गुड़ाक प्राकृतिक उपादान को आमे व्यवहार करी किछि उत्पादन करि थाउ प्राकृतिक उपादान को व्यवहार करी जोटी आमे किछि उत्पादन करि थाउ सेही क्षेत्र को आमे कहबा प्राथमिक क्षेत्र बा प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर फिशरी जो फॉरेस्ट्री माइनिंग एटसेट्रा कृषि क्षेत्र मत्स्य चाष बा माइनिंग जोटा रोची खनिज संबल एटा सब रहा प्राइमरी सेक्टर भीतर बिकॉज द नेचुरल रिसोर्स आर यूटिलाइज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस गुड्स दैट प्राइमरी सेक्टर तापर आम आलोचना करवा सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एटा बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन व्हिच the industries are engaged in producing the finished product जोटी इंडस्ट्री माने फिनिश्ड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बा फिनिश्ड प्रोडक्ट उत्पादन करी थांती तेणु इंडस्ट्रियल सेक्टर गुड़ा ऑल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर रॉ मटेरियल्स दैट इज सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली शिल्प क्षेत्र जोटा आम कहे मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एनर्जी प्रोडक्शन एडिंग वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स इन दिस secondary sector the activities like manufacturing construction energy production and adding value to raw material को वैल्यू ऐड करे हूँ सेकेंडरी सेक्टर थर्ड सेक्टर कौन टर्शियरी सेक्टर बा सर्विस सेक्टर इट इज अदरवाइज कॉल्ड सर्विस सेक्टर द सर्विस ऑफ ऑल काइंड्स द फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग सर्विस इंश्योरेंस सर्विस एजुकेशन हेल्थ ट्रांसपोर्ट टूरिज्म रियल एस्टेट लीगल सर्विस all these services are included in this tertiary sector or service sector जो सेवा क्षेत्र
आम सबु प्रकार सेवा बैंकिंग फाइनान्स बा आमर शिक्षा स्वास्थ्य रियल इस्टेट जो लीगल सर्विस एगुड़ा सेवा होची सब टर्शियरी सेक्टर बा सर्विस सेक्टर रे रोची। तेणु तेरे हूँ क्वाटेनारी सेक्टर क्वाटेनारी सेक्टर क्वाटेनारी सेक्टर it includes all industries that are concerned with the creation and distribution of knowledge. Creation and distribution of knowledge, that means research and development, education by research and development एटा हूँ सब क्वाटेनारी सेक्टर जोटी research and when there is research and development, when there is development in education, and this is called the quaternary sector. Basically it is the education sector but knowledge sector. Then 14 quinary sector. Quinary sector, the highest level of decision making of economy. But economy highest level of decision making कोट हुए जोटी आमर पार्लियामेंट हुए सरकार केंद्र सरकार अधीन जोटा हाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जोटा आम पार्लियामेंट कहते दैट इज कॉल्ड क्वीनारी सेक्टर। स्टेट लेवल आमर असेंबली गोटे क्वीनारी सेक्टर, सेंट्रल लेवल आमर पार्लियामेंट इज क्वीनारी सेक्टर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी हाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट इज क्वीनारी सेक्टर। 15 फॉर्मल सेक्टर। Formal sector means the sector which is registered with the government and they are regulated by government's laws like Companies Act or Factories Act. जो गुड़ा तो गवर्नमेंट गोटे विधिबद्ध भाव रे आईनगत भाव रे रजिस्ट्रेशन है बा नीति नियम रे चली सरकार को नीति नियम चले ताको आमे कहबा फॉर्मल सेक्टर। The sector which is registered with the government and they are regulated by government's law like Companies Act and Factories Act. ये गला फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जोटी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आमर जो एग्रीकल्चर गोटे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। City, the farmers are cultivating their land and they produce their goods, but they are not regulated by government's laws. No farmer is registered under government, but they are government registered. So it is unorganized sector, not regulated under any legal provision. Farmer, landless labor, street vendor, ये जो बुला दुकानी रास्ता बुला दुकानी। लेट अस डिस्कस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स द्रव्य सर्विस होची सेवा। द थिंग्स व्हिच वे पर्टिकुलर शेप्स द फिजिकल शेप एंड साइज दे हैव वेट एंड टू व्हिच वी कैन सी एंड वी कैन ट्रांसफर वी कैन टच, all these are called goods. This are physical in shape. And services. Both goods and services satisfy human wants. We satisfy our wants through goods and services. So goods and services both satisfy our wants. उभय द्रव्य एवं सेवा आमर अभाव को पूरण करे। गुड्स क्या कहुए ना जार गोटे पर्टिकुलर शेप्स अच्छी साइज अच्छी जहाँ आम ट्रांसफर करूँ देखिपारू छुई पारू ताको आम गुड्स बोली कहबा। एवं सर्विसेस इज नॉट फिजिकल शेप। सर्विस रे कौन फिजिकल शेप न थाए, दैट इज ह्यूमन सर्विस। Lecture service, teacher service, nurse service, doctor service, lawyer service, all these services are not in physical shape, but goods are having the physical shape.
18 consumer goods. Consumer goods are those goods to which we can consume directly, but those goods which give us direct satisfaction. तो जो द्रव्य गुड़ाक आमको प्रत्यक्ष भाव में साटिस्फाई करती जो द्रव्य गुड़िक पाखु आम प्रत्यक्ष भाव में उपयोगिता पाऊ परितृप्ति पाऊ ताको आम कह कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स साइकिल जो वॉच रेडियो बुक एंड खाता नोट जो पेंसिल पेन all are the consumer goods. We consume all of these goods directly and we get benefits or satisfaction directly from these goods. Producer goods. Producer goods mean those goods which help to produce the consumer goods. Those goods are used in the process of producing consumer goods. अर्थात consumer goods पाई उत्पादन पाई जो द्रव्य हमको साहाय्य करे ताको आमे कहबा प्रोड्यूसर गुड. ट्रैक्टर वी डायरेक्ट वी कैन नॉट कंज्यूम ट्रैक्टर डायरेक्टली बट ट्रैक्टर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स. इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर पर्पसेस टू प्रोड्यूस द गुड्स. द प्रोड्यूसर गुड्स ट्रैक्टर द chemical fertilizers pesticides all these are producer goods. Any machineries all machineries are producer goods. Then capital goods, the last but not least. Capital goods means those goods which are used for the further use of production, further in the process of production. Those goods are used to produce another things, another product, that is called capital goods. ताको ओडिया में पूंजी द्रव्य कहबा जहाँ अन्य उत्पादन हमको साहाय्य करुछि अन्य उत्पादन जोटा हमको व्यवहार करा जाउछि. तो कैपिटल गुड्स machineries all machineries are capital goods. Machineries are capital goods and these goods are used to produce the final finished product. कैपिटल गुड्स. ओके ठीक अच्छे पिला आज मुझे 20टा कनसेप्ट विषय आलोचना कली. मैं आशा करे ए कनसेप्ट गुड़ाक तुम जो फंडामेंटल तुमको क्लियर करने बहुत चेष्टा हेल्प करिवो. नेक्स्ट क्लास रे मु आउ 20टा कनसेप्ट नहीं आसुची. धन्यवाद. जय जगन्नाथ.